एयरटेल वो फाइबर वाला है, विच इज वेरी गुड यार. ये मेरा भी ऑप्टिक फाइबर है, इसीलिए तो मेरा. Okay, so today let's discuss about how to set up this home page, how to make हम्म. changes. So हम्म. we have two things. One is changing the color theme, changing this logo. हम्म. In case if you हम्म. want to move this to a different place, all that will be part of your theme. हम्म. Okay, just like you have themes in your mobile, हम्म. manage themes. Okay, ओके. okay. So if you click on theme manager, you will get into हम्म. the tool wherein you can configure the themes. हम्म. Okay, so by default now this is the theme which we have selected. हम्म. Let's say if you want to create a new theme or you want to copy this theme and you want to then improvise it. हाँ, वो कल वोडाफोन का एग्जांपल दिया वैसा है Correct, ना. exactly, yeah. So you can हम्म. click here and then click on duplicate. अच्छा. Okay, then एक नया theme बन जाएगा. हम्म. इसको मैं टेस्ट बोल के दे रहा हूँ. हम्म. ये दिख रहा है ना. This is the place where I'm actually trying to make the change to the theme name. या Okay. और डिस्क्रिप्शन. उसके बाद now we have so many options here. यहाँ पे मुझे हम्म. क्विक थीम, पेज बैकग्राउंड. अगर हम्म. मुझे पेज का बैकग्राउंड कुछ चेंज करना है तो एज ऑफ नाउ दिस इज हम्म. द कोड ऑफ द कलर. तो दिस इज द ओके. कलर, ये दिख रहा है ना हमें. हम्म. हम्म. ट्रू. लेट्स से इफ यू वांट टू मेक इट टू रेड, हम्म. मैं रेड कर दिया, अप्लाई. ओके, उसके बाद हम्म. मुझे शैडोज दिखना है कि नहीं, यस और नो. नो. हम्म. ओके, हम्म. फिर यूज डाउनलोडेबल फॉन्ट्स इन केस इफ यू वांट टू यूज डिफरेंट फॉन्ट्स. हम्म. ओके, तो फॉर योर टेक्स्ट ये जो भी फॉन्ट दिख रहा है इनको, इसको आपको इटैलिक करना है, वो जस्ट लाइक हाउ यू डू इट इन योर वर्ड. हम्म. ओके, उसके बाद use advanced styles in old browsers in case if there are any old browsers like Internet Explorer पुराना वर्जन है. हेलो, हेलो. कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी कैन ओके, मैनेज. और हम्म. ओके, सो ये बेसिक लेवल ऑफ सेटिंग है. उसके बाद एक एक विंडो में अगर हमें चेंजेस करना है then हम्म. we'll get into fine tune. हम्म. Okay, so I am trying to explain this just because you need to have this idea where do we make these changes to the colors and or themes. Okay, हम्म. normally this part will be generally done by the client side, अच्छा. क्योंकि वो नहीं बता सकते कि उनको क्या कलर चाहिए. They cannot give you this particular code. हाँ. Okay, they will test different things. हम्म. ओके, ये कलर चेंज करके फिर वो टेस्ट करके वो खुद लोग मैनेजमेंट वो सब बैठ के वो डिसाइड करेंगे क्या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है. जब अच्छा. वो सेटिस्फाई हो जाते हैं देन वी कैन डाउनलोड दिस टीम एंड वी हम्म. कैन अपलोड इनटू डिफरेंट सिस्टम्स. हम्म. तो नॉर्मली दिस वर्क will not be done by the consultants, but you should know where to change. That's it. हम्म. ओके, तो नेक्स्ट फाइन ट्यून में जाना है. फाइन ट्यून में जाने के हम्म. बाद इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड और टेक्सचर ऑफ द कलर ऑफ द हम्म. बैकग्राउंड, तो यहाँ हम्म. पे बेलीज डार्क बोल के है. इन केस इफ यू वांट टू चेंज इट टू समथिंग एल्स, वी कैन चेंज इट टू समथिंग एल्स. इफ यू वांट हम्म. टू अपलोड एन इमेज बैकग्राउंड में इंस्टेड ऑफ प्लेन बैकग्राउंड, इफ यू वांट टू सी एन इमेज एवरी टाइम, हम्म. ओके, देन यू कैन डाउनलोड एन इमेज एंड यू कैन अपलोड इट. क्या अपलोड करेंगे?
ये फोटो के अलावा सब कुछ आ रहा है। ठीक है, इमेज डाउनलोड कर देंगे। Okay, let me now upload this file. हम्म Okay, so it means now we want the background to be a an image, not a plain हम्म background. हम्म अगर हमें इमेज को रिपीट एक्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, अगर लेफ्ट करना हम्म है या राइट करना है हम्म या सेंटर में दिखना चाहिए, वो अलाइनमेंट भी हम्म चेंज कर सकते हो। ऊपर हम्म के साइड में दिखना है या नीचे की साइड में दिखना है, वो भी कर सकते हैं। लेट्स पुट इट टू सेंटर। हाँ, मोबाइल में करते वैसा ही है सेम। हाँ, तो वैसा पूरा करना है। फिर हेडर का बैकग्राउंड, ये हेडर जो हम्म है उसके हम्म बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है तो उसको भी हम हम्म चेंज कर सकते हैं। नाउ द हम्म अपलोड हेडर बैकग्राउंड इमेज इज दिस वन, आई थिंक दिस इज द वन। हम्म तो कुछ और चेंज करना है तो लेट्स अपलोड दिस वन। हेडर बैकग्राउंड कलर इज वाइट, लेट्स मेक हम्म इट डार्क एंड देन वी हैव दिस लोगो। वो जैसे वोडाफोन का लोगो डाउनलोड करके चिपका देना है। हाँ, लेट्स डाउनलोड एसएपी लोगो। इसके लिए एक्चुअली कुछ साइज भी लगेगा। यू कैन नॉट जस्ट अच्छा। अपलोड एनी साइज, 210x40 ऐसा हाँ कुछ रहेगा। हाँ, एक लिमिटेशन रहती है। हाँ, इन तो दैट लिमिट ओनली वी हैव टू अपलोड। करेक्ट। सी, फिर लोगो का पोजीशन आपको लेफ्ट में चाहिए या सेंटर में चाहिए या राइट साइड चाहिए? हम्म लेट्स पुट इट ऑन द इन द सेंटर। ओके, नहीं तो राइट में लगा देंगे। प्लेस मैट, तो ऐसे डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन जैसे आपको चाहिए वो सब आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। हम्म ओके, एंड देन वंस यू डन, देन यू कैन जस्ट सेव दिस। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स अप्लाई दिस चेंज टू आवर सिस्टम एंड देन ट्राई टू लॉग आउट हम्म एंड लॉग इन एंड सी हाउ द चेंज इज गोइंग टू लुक। हम्म हमारा टेस्ट कब है? ओके, दिस इज द वन। नाउ आई एम मेकिंग दिस इनटू डिफॉल्ट, हम्म हम्म because so default बोले तो now our theme will be this one, test training. हम्म हम्म Okay, once done we'll save this. You are about to make changes to the viewable theme. The updated theme will show your changes in the next time your users log in. हम्म Okay, okay, so let's log out and log in and then we'll be able to see these changes. हम्म तो उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, कुछ है नहीं उसमें। हम्म कौन सा कलर सेलेक्ट करोगे, वो कौन सा ड्रॉप डाउन में जाओगे बोल के कोई पूछेगा नहीं, वो उसके बारे में कोई पूछेगा। जस्ट दे माइट हम्म आस्क यू लाइक इफ आई वांट टू चेंज द कलर थीम ऑफ द इंस्टेंस, वेयर डू यू डू इट, दैट्स इट। आप बोल दोगे थीम मैनेजर, हो गया, ये देखो पूरा रेड हो गया। एवरीथिंग ठीक है, और चेंज। तो ये कुछ नहीं चेंज हो। वो थोड़ा R&D करना है। ये सिर्फ इसका कलर चेंज करना है तो क्या करना है, इनकेस इफ आई क्लिक ऑन समथिंग और अगर मुझे हम्म कुछ पॉपअप का विंडो दिख रहा है तो उसका कलर कुछ चेंज हम्म। करना है तो कुछ और चीज में जाके चेंज करना पड़ेगा। वो तो बैकग्राउंड वाला किधर गया, घोड़ा वाला? हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। एक बार होम पेज में जाएंगे। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है वो। सेंटर, एडमिन सेंटर। ये लोगो तो इस तरफ चला गया।
लोगो हमने SAP का भी लोड किया, वो भी यहाँ पे नहीं आया। वो भी नहीं। तो थोड़ा और R&D करना है. In case if you want to export this, you can do ठीक it. है, You have the ठीक है, ठीक system, है, ठीक। so you have to go हाँ into हाँ। theme manager. अच्छा, ये जो आपका आपका जो एडमिन सेंटर है, हाँ. द वे इट लुक्स लाइक, हम्म. तो मैंने जो एडमिन पासवर्ड जो आपने दिया मुझे, तो Yeah. देयर एडमिन सेंटर इज एंटायरली डिफरेंट। Okay. तो ये I'll show वाला you. हम्म, I कैसे thought बनाना it है? will happen. हाँ. तो वो सिर्फ एक क्लिक करना है, एक चीज. अभी पूरा रेड हो गया, अच्छा, देखो यहाँ पे ब्लू से. हाँ अभी हो रहा है शायद। बट वो घोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया. घोड़ा आएगा, थोड़ा घास खाने गया अभी। अरे सॉरी, फिर से मेरा लॉगिन. अपलोड होने में टाइम लग रहा है। ए मंत्री अविनाश 7। ओके, अभी आपको इस यहाँ से आपको एडमिन सेंटर जाना है. हम्म। कहीं से भी जा सकते हो. सो दिस इज वेयर यू आर सीइंग द डिफरेंस, राइट? या दैट्स व्हाट। सो इन केस इफ यू आर सीइंग दिस वन, टाइल्स और हम्म। डैशबोर्ड वो सब दिख रहे, तो व्हाट यू डू इज कंप्लीटली स्क्रॉल डाउन. ओके. ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्विच बैक टू वन एडमिन बोल के रहेगा. अच्छा अच्छा अच्छा। ओके. सो द हम्म। द tools which I am seeing in admin center, that is हम्म। part of one admin. सिर्फ व्यू चेंज होगा बस. अच्छा। ओके। ओके. तो व्हेन आई क्लिक दिस वन, आपको भी वही दिखेगा. अभी it will get updated. Let's हम्म। refresh this. लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा, पता नहीं। ये हो गया. गॉट इट। ठीक है. ओके। दैट्स इट. अभी मैंने जो कल किया था ना, हाँ. इन सर्च में मैं जाके टाइल टाइप किया, TILE। इधर सर्च में TILE टाइप किया। ओके. हाँ. ठीक है, देन आई गॉट सम ऑप्शन। ये कौन मैनेज कौन सी है? मैनेज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड. मैनेज डैशबोर्ड। ओके 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 I went to these. ओके Then second option, manage tile based dashboards. I went to these. ओके. इसमें क्या है? उसके बाद में सी इट विल हम्म, एक्चुअली शो यू द डेटा इन ग्राफिकल ओरिएंटेशन. लाइक लेट्स से अच्छा। आपको एम्प्लॉइज कितने बंदे लास्ट 3 मंथ्स में ज्वाइन हुए हैं बोल के देखना है. हम्म। Okay, so for that, you first thing you need to probably design a report, हम्म। and that report information should show in a graphical manner. नवंबर में कितना है, दिसंबर में कितने, और जनवरी में कितना है. हम्म। तो that you will probably see as a pie diagram, or you can see it हम्म। as a bar diagram, हम्म। bar charts. तो वैसे कुछ हम्म। आपको देखना है तो then you will come to manage dashboards. ओके। बट अगर आपको नया टाइल्स क्रिएट करना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. So you need to go हम्म। into, let me log in as myself. हम्म। You have to go into manage home page, because that is your अच्छा। home page where you are going to see all the tiles. So you have to go into manage home page. Then हम्म। here you can create your own tiles. Okay, so once I complete this class, whenever you have time, create couple of tiles. एक एक टाइल में different things आप ट्राई करके मुझे कल दिखाना. या ओके. और कल क्या करेंगे हम? विल not get into any session. First 15 minutes we'll discuss what all we have covered so far. यस। तो कितना तक आपको याद है, कितना कुछ कंफ्यूजन है, तो वो सब हम क्लियर करके उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे. क्योंकि once all this is done, then we'll get into actual सक्सेस फैक्टर कॉन्फ़िगरेशन. मैं अभी तक का प्रैक्टिस कर लूंगा।
Okay. and I will start explaining everything to you what Sure. we started from day one. All right. Sure. ठीक है ना? Okay. कुछ लगेगा तो आप बीच में रोक देना कि ये गलत बोल रहा है या ये इम्प्रूव हाँ, करना है, that's it. definitely. That is why I wanted to have this session. ठीक है. So ठीक once है. you come into manage home page, you will click on add हम्म. custom tile. ओके. Okay. So it means you want to create a new tile. हम्म. अगर existing tiles में कुछ changes करना है तो this is the place. You will see all the existing tiles here. हम्म. So first let's get into creating a custom tile. हम्म. जैसे मैं टाइल का नेम और डिस्क्रिप्शन कुछ दे दिया, ठीक है. हम्म. Then you will हम्म. click on next. हम्म. Now you will have lot of options. Should it be graphical or will it be static? हम्म. Graphical बोले तो probably it will be like animated. Static पिक्चर बोले, और कुछ होएगा. हाँ correct. Static हम्म. बोले तो then you will not change anything. Whatever you नंबर्स. type here, that will be appearing there. अच्छा, ऐसा तो नहीं स्टैटिक मतलब चार्ट वगैरह कुछ नहीं? No, static बोलते चार्ट नहीं. आपको चार्ट्स वो सब दिखना है तो मैनेज डैशबोर्ड्स उसमें जाना है. अच्छा अच्छा. और वहां पर जो टाइल आप क्रिएट करते हो वो टाइल को आपको एक रिपोर्ट को लिंक करना पड़ेगा. और जो हाँ, भी जो वो मैं पहले. रिपोर्ट में, हाँ पहले आप ट्राई कर रहे थे ना वो वाला. अच्छा अच्छा. हाँ ठीक है, वो भी दिमाग में बैठ गया मेरे हाँ, अभी. गुड. चार्ट प्रिपेयर दैट इज करना हाउ होगा. वी एक्चुअली एक्सप्लोर. अगर ये टाइल को कुछ आप ये आइकॉन जैसा देना चाहते हो, हम्म. ओके, तो SAP has already given some icons. ओके. Okay, you can select any of them. ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग. यहाँ पे सर्च का कुछ ऑप्शन नहीं है तो पूरा ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है. हम्म. ओके, लर्निंग बोल के कुछ मिल रहा है तो ये सेलेक्ट कर दिया मैंने. ओके, सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक योर टाइल. ओके. ओके, देन और कुछ चेंजेस करना है तो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके. नाउ टारगेट पॉप ओवर जैसा चाहिए. आप अगर आप क्लिक करोगे तो यू वांट समथिंग टू पॉप अप, or do you want to show a URL? Okay, or if you want to send a email. Okay, no target बोलते, I'm not sure what this is. Then width, कितना height और width चाहिए. See, you might be seeing lot of tiles which has some predefined size. अगर आपको छोटा या बड़ा करना है, have you used this one Nokia Lumia phone? नहीं यार. उसमें actually tiles दिखता है. Okay, अच्छा. even in our Windows system also, all these are tiles. हम्म. So you can actually increase and decrease these tiles. हम्म. Okay, let me show you. इसको आप राइट क्लिक करोगे तो resize बोल के रहेगा. So these are all the different sizes we have. अब लार्ज कर अच्छा दोगे तो अच्छा. दिस इज how it will become. And अगर आपको मीडियम या वाइड करना है तो it will become like this. समझ गया. Okay, in the Got it, got same it. way, all these tiles are also having some sizes. ये साइज को तो अगर सेम. आपको चेंज करना है तो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट इट हियर. विड्थ कितना होना ओके. चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और टेम्पलेट कैसा दिखना चाहिए. वंस यू ओपन द टाइल, हाउ डू यू वांट टू शो द कंटेंट. जैसा हमारे हम्म. PPTs में रहेगा ना, हम्म. the same way if you want a header and then description kind of thing, और आपको ऐसा blocks जैसा चाहिए. हम्म. Okay, in case no template, it means you don't want to show any particular template, then you can select this. In case if you have हम्म. something in HTML, बोलते हम्म. something which is not related to these two, and if you have created something, so because we are हम्म. using a web based application, everything is in HTML. तो अगर हम्म. आपके पास आपको HTML आता है and you have created a template using HTML tag,
then you can actually select HTML tag, and then it will ask you to provide that HTML tag. Okay, so when I say okay, it will ask you for the content. तो जो HTML टैग में आप ऑलरेडी लिख के वो प्रोग्राम लिख के यहाँ पे कोड लिख के कॉपी पेस्ट करोगे, उसके हिसाब से आपका टाइल दिखेगा. In case if you want to just select a predefined template, then you can select any of these. Rule based बोलो तो let's say in case if you have a business rule, like let's say only for these employees it should be visible. Okay, ऐसा कुछ condition based है. It means it will not appear for everyone. ऐसा कुछ let's say it should appear from 1st of January till 3rd of January. Okay, वो आप दूसरे जगह कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको कुछ रूल में कुछ डिफाइन करना है, we'll get into the rules. Rules are actually a little complex part, which will come later on. So probably that time we can use configure a business rule and we can link that business rule. Okay, so you are not telling the system that you want to show this style directly based on a predefined condition. Only if the condition gets satisfied, this style will appear on your home page. So during those scenarios, you will select generic rule scenario. Okay, and then you have show new recruit onboarding content. So this one, let's say if you are joining to a new organization, so the company wants to show you some content before you join the organization. Like let's say company ka pura policies. Okay, so it wants you to read those documents or whatever content. तो वो सब अगर आपको दिखाना है तो you will select this one. So when you select this one, this will be appearing only for all the new recruits, not to the existing employees. Okay, so if in case if you have such kind of requirement where a tile should appear only to the new recruits, then you will be selecting this one. Okay, and then languages. जितने भी हमने languages, you remember options में हमने languages देखा था. यहाँ पे settings में जाने के बाद on the left hand side we have something called as change language. So these are all the different languages that we have enabled in this instance. This we have actually enabled in the provisioning system, but these are the only languages that are supported in this particular instance. So whatever language that you have selected here using provisioning, the same list will appear here. So in case if you want to show your content in a specific language, then you can select that particular language. Okay, and then uske hisab se you can now add some content here. Okay, in your tile, for your tile, you can create, you can add some links. Let's say when you go to your home page, you will see several tiles. So inside the tile, you can show images, you can show some content, you can even show links also. Okay, click this link for so and so help. Click this link to reach out to HR. Click this link to reach out to payroll. ऐसा कुछ अगर links आपको add करना है, so you can do that also. So यहाँ पे add insert link बोल के है. So you can add that particular link. Okay, then what will happen is, like let's say, okay, let's do it. ये मैंने एक link पकड़ लिया और URL. Okay, तो मैं इसका URL दे दिया. Text to display SAP logo. SAP logo. Target is new window. So अगर आपको वहीं पे दिखना है तो you will select none. In case if you want to open it in a new window, when you click that thing, when you click this link, if you want it to open in a new window, then you will click on new window. Okay, you click on OK. और now मेरा link बन गया है यहाँ पे SAP logo बोल के. Okay, along with that, in case if you want to add some images, you can click here. Okay, it means in the tile, the background will be a
an image. Okay, so now I'm Oh. uploading an image. Hmm. Okay, the image is updated. Okay, so in this way you have several options to configure your tile. Hmm. Okay, then what else is missing? I think rule based. Okay, गया क्या फिर से? Okay, URL. Okay, then you click on next. Hmm. उसके बाद कौन सा सेक्शन? सो इन योर होम पेज देयर आर डिफरेंट सेक्शंस. माई इन्फो, माई टीम. टू डू में आप ऐड नहीं कर सकते हो. टू डू इज समथिंग स्टैंडर्ड. यू कैन नॉट ऐड Hmm. एनी टाइल्स टू योर टू डू. Hmm. टू डू में क्या है? इट विल शो यू इन केस इफ देर आर एनी पेंडिंग आइटम्स यू आर सपोज टू कंप्लीट. कोई एक्शन आइटम. Hmm. Hmm. So system will check if there is any pending from your side, and then it will show you those pending items as a tile. अच्छा. So you cannot say that I want to show my tile in to do. It means जो टाइल आप क्रिएट कर रहे हो वो कुछ पेंडिंग आइटम्स नहीं दिखा रहा है. जो आप Hmm. 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 कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो बाय डिफॉल्ट जो भी आपने उसमें डाला है टाइल के अंदर वही दिखेगा. Hmm. बट Hmm. दीज आर डायनामिक. दीज थिंग्स कीप चेंजिंग. लेट्स से अभी 7 है. Okay. इन केस आज टुडे इफ समवन हैज अप्लाइड फॉर लीव्स और Hmm. आपके पास कुछ लीव रिक्वेस्ट पेंडिंग आ गए हैं, सो दिस 7 might become 10 or even 11. Okay. 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 So based on the number of requests, pending requests, these numbers keep changing it. It's not static, it is dynamic. अच्छा. Okay, similarly, let's say आपने आप फिनिश योर प्रोफाइल इसमें जाके आपने कुछ और ऐड किया, आपके फोटो ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, सो इट विल बिकम 98. Hmm. Hmm. Okay, Hmm. तो once it is 100%, you will not see this tile anymore. So अच्छा. अच्छा. इसीलिए अच्छा. टू डू में आपको कोई भी टाइल ऐड नहीं करने देगा. जो भी काम पेंडिंग है वो यहाँ पर वही अपीयर होगा. यहाँ पे आएगा. एंड एग्जैक्टली. जैसे 100% हुआ इट विल डिसअपीयर. Correct. दैट्स इट. Even this one, in case if you complete this हाँ. task, it will हम्म. not be visible anymore. ठीक है. Okay. So all these are called as sections. My info, my team, my specialty. तो ऐसे हम्म. कुछ आपको कोई particular section में रखना है. Let's say I want to put it in my team. हम्म. Okay. Active. तो active बोले तो see tiles you can create it. But let's say you are creating a tile for let's say Holi, which is in हम्म. March. You want to keep हम्म. everything ready so that as soon as Holi comes, you want to display that Holi, happy Holi बोल के tile to all the employees in your Indian company, Indian unit. हम्म. So हम्म. you can create it and you can make it inactive. हम्म. Okay, or you can select a date saying that I want this tile to be visible only between March 1st 31st. and 3rd of March. हम्म. Okay, so you're defining the dates such that the tile is appearing only between these 3 dates. हम्म. It will not appear now because now it is Feb 3rd, and it will not appear after 3rd of March. हम्म. Okay, or in case if you want to select based on start date, हम्म. तो जब भी आप ये select करोगे from the date -30 हम्म. days or +30 days दिखेगा. In case if you want to reduce it, you can reduce it to हम्म. -10 and +10. तो जब भी आप ये टाइल दिखाओगे उससे वो डेट के हिसाब से उससे पहले वाला 10 days और उसका बाद वाला 10 days के बीच में दिखेगा ये टाइल. ओके. 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 ओके,
So in case if you put it as active always, it will be always visible to everyone. ठीक है. Okay, so now ये tile ready हो गया and we have applied the we have saved the tile. Now I think we have put it in my team, right? Yeah, this one. So यहाँ पे my team section में हमने डाला है. So now let's see what are the other options available here. Training session tile is a tile. यहाँ पे move to बोल के है. Okay. So move to में अगर हम drop down में जाएंगे तो you have repository and not use. Okay. So these are the two things which are appearing here. So when it says repository, it means you want to keep all the tiles in one place, and whenever you want to use, only then you move them into the default one. Okay, this is just like your inventory. You're not going to use it. अगर आपको ये टाइल यूज ही नहीं करना है, let's say you created this tile but you didn't like it and you want to scrap it, then you can actually either delete it और इन केस उसको बाद में हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं बोल के अगर आपको लगेगा तो यू कैन इवन मूव इट टू नॉट यूज्ड. तो व्हेन यू चेंज इट टू नॉट यूज्ड, it will disappear from here and it will be visible in not used. यहाँ पे आ गया देखो. Okay, so it means you don't want to use this tile, but if you put it in repository, it means you want to use it later on. Okay, फिर से यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी टाइप सेव करके रख लो. हाँ, exactly, correct. और यहाँ पे activist you have selected always, so यहाँ पे always दिख रहा है. Just in case if you had selected some dates, probably it would have shown you the date that this is valid only between these two dates. Okay, or removable by user, it means if you set it as yes, okay, ये टाइल आप निकाल सकते हो. It means you have an option to delete this tile from your home page. You thought that okay, this is useless tile, I don't want to see it. Optional देंगे हमें employees के लिए. If you set it as no, it means this tile will be visible to all the employees and they cannot remove it from their home page. If you set it as yes, it can be removed. Removable by user, yes. Section we have selected as my team, तो इसीलिए हमें my team में दिखेगा अभी. In case if you want to change the section, then you can change the section here. Okay, then you can even edit it. So whoever has access to manage homepage, they can edit. So if you see, many of the tiles do not have this option to edit. It means they are not custom tiles. Simple. जो भी स्टैंडर्ड टाइल्स है उसके लिए अलग सा कोडेड है, स्टैंडर्ड कोडिंग. You cannot modify any of the standard tiles. You can only modify whatever tiles that you have created, custom tiles. Okay, जो भी हम क्रिएट करते हैं उसको कस्टम बोलते हैं. जो भी सिस्टम के साथ आते हैं which you cannot modify, they are called as standard. Okay, so once we done with the configuration, let's see if we can see our tile in my teams. My team में वो नहीं दिख रहा है, so let's try to refresh, log out and log in. log out and log in. अभी भी नहीं है. It will take time, I think. नहीं यार, immediately दिखेगा. Let's see if there is any setting that we missed out. Manage homepage. My team.
अरे हमने ये इसको रिपोजिटरी में डाल दिया शायद. हाँ, ये रिपोजिटरी में है. You have to change it to default. So this is how we test it. तो एक बार हमने कर दिया तो जहां पे हमें दिखना चाहिए वहां जाके एक बार देखेंगे. अगर नहीं दिखा तो we'll come back to this and see what is the issue. See, now it is आ appearing. गया आ गया आ गया. Okay, so when you click this, now you'll be able to see the Goda wala picture. Now because we have set the size of the tile, now it is not displaying with the complete image. Okay, थोड़ा scroll करना पड़ रहा है because we have set the window size. You remember? So in case if we change the size of that, then you'll be able to see the complete image. Or we have linked this with the URL, right? इसके पीछे हमने ये लोगो को चिपका दिया. तो if we click on this one, it should actually open a new window with this. See, this is how you can design your tile. ठीक है, तो इसमें हमने एक इमेज डाल दिया है. उसके बाद हमने वो लोगो भी डाला है. लिंक सेट कर दिया. लिंक सेट कर दिया, करेक्ट. URL. In case if you want to make it big, स्मॉल बोल के है ना, ये मैंने लार्ज कर दिया. लार्ज. लेट्स गो टू होम पेज. क्लिकिंग दिस. सो अभी थोड़ा बड़ा हो गया. Okay, so this is how you can make changes in your tile. Okay. Or let's say if you don't want to see this, or maybe you can actually see the image and also on top of it you want to add some text like happy Holi or happy Republic Day, कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं. So click on this one. Now you'll be able to see Happy Republic Day also. Okay, so this is how you make changes to your home page and also your themes. So today what you can do is if you want to explore, you create couple of tiles in different sections. I'll do. Okay, try No to problem. move them, try to add some URLs, try to add some images, कुछ टेक्स्ट कर दो, कुछ विशेस हैप्पी बर्थडे बोल के कुछ बना दो. उसके बाद ट्राई टू चेंज दिस कलर्स. ओके, वो थीम के अंदर जाके जो भी आपको मिला वो सब चेंज कर दो. ओके, एंड देन लेट्स सी इफ यू कैन चेंज ऑल दिस कलर्स. कुछ नया यूआई बना दो आपका सेशन के लिए. ठीक है. ठीक है. Okay, that's it for today then.